आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। नहीं, उनको हमारी भी नहीं जा रही ना। मैम क्या आ रही है? ठीक 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 ठीक, ओके मैम, आपकी जा रही है, आपकी जा रही है। आप अपनी साउंड चेक करें, आवाज नहीं आ रही है। मैम हो गया, आपका भी आ गया, दोनों साइड हो गया। नहीं, उनकी कहाँ रही है? उनकी तो नहीं आ रही। हेलो, हम लोग की आवाज नहीं आ पा रही। आपकी आवाज ऑनलाइन नहीं आ रही है। हम लोग की आवाज आ रही है। आप अनम्यूट। आप अपनी साउंड चेक करें, आवाज नहीं आ रही है। आप सुनिए, अब आवाज आ रही है? हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है। थैंक यू। उन्होंने मूव कर दिया।
साथ और बच्चे जो आएंगे उनका नाम ISCA तो बोलेंगे तब पता चलेगा। अनूप अनूप हाँ हाँ यस greetings and good morning, faculty members, other students, and my dear participants. I am Dr. Charu Chaturvedi, faculty member of British College, Kanpur. It's my absolute pleasure to extend a hearty welcome to each one of you present here at the lecture series 2024, organized by Indian Science Congress Association, Kanpur chapter, in collaboration with British College, Kanpur. Today, we are gathered here to exchange ideas and have open discussions on the vast topic of challenges for sustainable development. We are fortunate to have among us today distinguished speakers who are noted figures in the field of science and technology.
Each one of them brings invaluable expertise and insights with them that will indeed make our exploration of the seminar topic a fruitful and enriching experience. जैसा कि हम सभी सदैव चाहते हैं कि मां सरस्वती की असीम कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। उनके आशीष के बिना हमारी विद्या अधूरी है। अतः मैं समस्त अतिथि महोदयों से सविनय निवेदन करूंगी कि वह आपका दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको प्रदान। हमारी प्रज्ञा जो कि सरस्वती वंदना गाएगी। मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे, पूर्णेश अज्ञान उदधि से, पूर्णेश अज्ञान उदधि से वीणा तारदे मां सरस्वती शारदे, श्वेत कमल के श्वेत हंस तेरा, श्वेत कमल तेरा श्वेत हंस तेरा हम पर सिद्धि दृष्टि कर जननी बोधिशीली दार दे वीणा वाणी दार दे मां सरस्वती शारदे, मां शारदे। इसके बाद भैया जी का बहुत सुंदर वंदना हमारी प्रज्ञा की तरफ से। हम सभी के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक रहे जो कि आज नहीं परंतु आशीर्वाद से आज हम सभी बड़ा सादा करते हैं। पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कार्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत के कार्य के साथ अपनी सचिव श्रीमती उनको सरोज का स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन के साथ अब मैं प्रोफेसर अवधेश सिंह सर जिसे विनम्र अनुरोध करना कि वह यहाँ आकर पुष्प गुच्छ से डॉक्टर शक्ति विनय सर जो गेस्ट ऑफ ऑनर है आज हमारे कार्यक्रम के स्वागत। अब मैं प्रोफेसर मिश्रा सर केमिस्ट्री अनुरोध करूँ कि वह मोमेंटो दे सर स्वागत है। डॉक्टर शुक्ला सर स्वागत है।
अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी प्रोफेसर जितेंद्र मोहन सर जो प्रभारी है मध्य डिपार्टमेंट यहाँ आ डॉक्टर DS बास जो कि स्पेशल गेस्ट हैं आज हमारे इवेंट में, इनका स्वागत है। मैं प्रोफेसर पंकज टंडन सर जो जूलॉजी प्रभारी है से अनुरोध करूंगी इस स्मृति चिन्ह प्रदान करने डॉक्टर बाग सर स्वागत है। मैं प्रोफेसर RV तिवारी सर जो स्टैट प्रभारी है से अनुरोध करती हूँ और यहाँ आकर हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित सर स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ। मैं प्रोफेसर राजू सक्सेना सर हिस्ट्री विभाग से अनुरोध करूंगी कि वो मोमेंटो प्रदान करके हमारे प्रिंसिपल सर का स्वागत। अब मैं प्रोफेसर रजत सर जो चीफ प्रॉक्टर हैं हमारे कॉलेज के उनसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि वह यहाँ आकर प्रोफेसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर जो कन्वीनर है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के उनको पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत। मैं प्रोफेसर रोहन सक्सेना सर जियोग्राफी प्रभारी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वह यहाँ पधारें और प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं अब प्रोफेसर अजय सर प्रभारी कॉमर्स से विनम्र आग्रह करती कि वह बुके प्रदान करके प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सक्सेना सर डीन फैकल्टी ऑफ साइंस SGM मैं प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव सर फिजिक्स प्रभारी हैं उनसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि वह यहाँ आकर स्मृति चिन्ह से प्रोफेसर ब्रजेश सर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी हैं उनका स्वागत। हम सभी के आदरणीय सदैव ही नई ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित सर से मैं आज सादर अनुरोध करती हूँ कि वह स्वागत भाषण के लिए यहाँ पर आए। सर स्वागत। Honorable Mrs. Kumbu Swarup, Secretary Board of Management, Dean College Kanpur, EC member, Indian Science Congress Association. Dr. Shakti Vinay Shukla ji, Director FFDC Kannauj. Dr. DS Bhatt, Additional Director DMSA Kanpur. Dr. Sudhir Pratap Singh, Scientist, DBT CIAB Mohali. Professor Sudhir Kumar, Convener,
Indian Science Congress Association, and my dear colleague, Professor Brajesh Saxena ji, Head Department of Chemistry, my dear brothers and sisters, I welcome you all. I feel extremely glad to welcome everyone in this lecture series, which is being held jointly by DAV College and Indian Science Congress Association. It gives me immense pleasure to stand in front of you all, that is among the most esteemed personalities who have excelled in their respective fields. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. At the very outset, I pay my respect to grand visionary Swargir Dr. Nagen Swarup for path of enlightenment shown to all of us. I welcome from the core of my heart the chief guest of the session, Madam Kumkum Swarup, Secretary, Board of Management, who has joined online and given support to hold the event. She has been source of inspiration for all of us. I welcome the guest of honor, Dr. Shakti Vinay Shukla ji, Director, FFDC, Kannauj. He is a well-known researcher, and we all will be benefited by his enlightened talk. I sincerely welcome his special guest, Dr. D.S. Batsar, Joint Director, DMSRD. He has vast experience in chemistry of polymer and has been well known in his field. I extend warm welcome to subject expert Dr. Sudhir Pratap Singh, scientist D from Mohali. He is recognized researcher, and I am sure his lecture will explore many possibilities in his area of research. I welcome Professor Brajesh Saxena ji, who is a very competent, enthusiastic, not only the head of the department, but it's a proud for DAV College that he is a convener and Dean Faculty of Science. I welcome all the organizers of Indian Science Congress Association Kanpur chapter for holding such an important event to celebrate the National Science Day in true history. At last, I welcome all the guests, ladies and gentlemen present in this conference, and hope this conference will achieve its goal. Thanks. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. चले भी गए वो, देखिए जी। सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिगुण की हमारी चीफ गेस्ट सचिव महोदय माननीय श्री कुमकुम स्वरूप जी, जो कि हमारे लिए हमेशा की एक नई आशा, नई प्रेरणा और नए मार्गदर्शन का स्रोत रहे हैं। हम सभी जब उनके द्वारा स्थापित व्यक्तियों को देखते हैं तो निसंदेह हमें पुनः आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं अति उत्साहित हूँ कि मैम हमें अपने आशीष बच्चों से अभिसंचित करें। स्वागत है। इस व्याख्यान माला में आए हुए अतिथि डायरेक्टर FFDC डॉक्टर शक्ति विनय शुक्ला, जॉइंट डायरेक्टर DMSRD डॉक्टर DS बेग,
साइंटिस्ट डॉक्टर डी सुधीर प्रताप सिंह, प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित जी, कन्वीनर ऑफ इसका प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव जी, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कानपुर चैप्टर और डीएवी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर व्याख्यान माला आयोजित की गई है। इसके लिए मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है, भारत सहित 193 देशों ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया था और 1 जनवरी 2016 को यह लागू किया गया था। इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, जिन्हें 2016 से 2030 तक की अवधि में प्राप्त करना है। सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है जो कि हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के 3 पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप में समाविष्ट करना है। भारत लंबे समय से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। प्राचीन भारत की अनेक परंपराओं में सतत विकास की अवधारणा पहले से ही समाहित है। भारत सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने पूरे देश में विज्ञान के प्रचार, प्रसार एवं विकास से उत्कृष्ट सेवा की है। इसका के अनेक विभागों ने विज्ञान के प्रसार में अद्भुत योगदान दिया है। एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस में किसानों के मध्य कृषि की नवीन संभावनाओं की तलाश, वुमेन्स साइंस कांग्रेस में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं चाइल्ड साइंस कांग्रेस में बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे इसका के उत्कृष्ट कार्यों का प्रमाण मिलता है। 1919 में स्थापित डीएवी कॉलेज स्वतंत्रता आंदोलन, समाज सेवा, शिक्षा के विस्तार, वैज्ञानिक चिंतन के विकास में सदैव अग्रणी रहा है। स्वर्गीय नागेंद्र स्वरूप के विजन को महाविद्यालय ने मूल मंत्र मानते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी एवं आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की ज्ञान स्थली रहा डीएवी कॉलेज ने देश को उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं समाज सेवी दिए हैं। आधुनिक भारत में विज्ञान के प्रचार प्रसार में अग्रिम भूमिका निभाने वाले इसका की यह व्याख्यान माला देश में युवाओं को विज्ञान एवं सतत विकास के क्षेत्र में योगदान हेतु प्रोत्साहित करे एवं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विनर्स कुछ हमारे साथ हैं, जिसमें क्विज की टॉपर्स कुमारी प्रियंका पांडे यहाँ आए और शुक्ला उत्साहवर्धक स्वरूप पुरस्कार इसका उन्हें सम्मानित करता है। इंडियन साइंस कांग्रेस की तरफ से इन बच्चों का उत्साहवर्धन होता रहता है। अब डॉक्टर बाग सर से अनुरोध करूंगी कि कुमारी शुभी गुप्ता ये भी क्विज की मेरिट के लिए टॉप की हुई स्टूडेंट हैं, आए और सम्मान करें। डॉक्टर बाग सर जोरदार तालियों के साथ हम सभी अब मैं प्रोफेसर विजय सर से अनुरोध करूंगी कुमारी श्वेता सिंह का उत्साहवर्धन करें। कुमारी श्वेता सिंह क्विज में पुरस्कार पा चुकी है। इसका धन्यवाद।
Now, I would like to introduce our guest of honor, who is our first speaker of the day, Dr. Shakti Vinay Shukla, sir. Dr. Shakti Vinay Shukla, sir, stands as a luminary in the fragrance and flavor industry, serving as the esteemed director of the Fragrance and Flavor Development Center in Cambridge, which is a rich academic background. Shukla sir earned BSc in Chemistry, MSc Chemistry from Banaras Hindu University, Varanasi in 1988 and 90 respectively. His journey is aromatic rhythm commenced as a technical assistant at SPGI. Shukla served impact transcends his administrative roles. He is celebrated for his prolific contributions to fragrance and flavor creation, having designed over 400 fragrances and flavors alongside pioneering work in aromatherapy products. His scholarly pursuits are equally commendable, evidenced by his authorship of over 100 papers and presentations, books, and holding a patent in the field. He is president of Kannauj Kalkhava Vibhag of Vigyan Khalkha. So, over to you, sir, for the teaching. चलो होगा तो बहुत अच्छा नहीं करना पड़ेगा अच्छा तो कॉपी कर लीजिए कॉपी कौन सा बता रहे हो ओके ओके तो क्या मैं ऐसा करता हूँ सर की पेंडेंट आपको दे देता हूँ आप अपने अच्छा कर सकते हैं अच्छा अच्छा ठीक है मैं शेयर करूँगा वहाँ से प्रेजेंटेशन दोगे तो ऑनलाइन जाएगा तो ऑनलाइन जाएगा ऑफिस से केवल कॉपी अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है सर अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है अच्छे से रन करूँ क्या कोई और
भी सेव है कैसे? नहीं मैं मेल मैं दोबारा एक बार इंटर करता हूँ। ये था कुछ इशू है क्या? कुछ इशू आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कुछ इशू आ रहा है ये पीपीटी खोलने में दिक्कत आ रही है। नहीं ऐसे कैसे मेल कर इशू आ रहा है तो दोबारा शेयर करना
राइट साइड का बोला भले बाटे हल्का स्क्रेच भइल बा हल्का स्क्रेच बा कौन सा ऑप्शन 2-3 महीने आगे सर आगे शेयर कर अटैच करना पड़ेगा नहीं वहां से चलाएंगे इस पे तो फिर देखिएगा मुझे कैसे इस पे भी दिखेगा इसको तो लगाने के बस आप हाईलाइटेड यूज कर सकते हैं लेटर्स पर चलेगा पॉइंटर यूज कर सकते हैं पॉइंटर पर नहीं चलता ना चले स्क्रीन पर नहीं चलता अब देखिए ना इस स्क्रीन पर नहीं चलते हैं पर उस वाले पे चलते हैं ना थोड़ा चलेगा बात करें चलिए चलिए ठीक है चलिए चलिए Sir, can I have the presentation? So, thanks to Dr. Sudhir Dikshit ji for giving me this opportunity. Though the subject is sustainability, I will be talking basically about the fragrance flavor essential oil industry, where a lot of sustainable aspects are interwoven and which I will be throwing light in between. When I had a discussion with Sudhir sir and I asked about the audience, I thought that apart from these aspects, if I could able to rope it up regarding the subjects, which builds up a lot of business and simultaneously a lot of career opportunities to the people, because very less organizations are there, those who are working into this segment, and a lot of business opportunity and a lot of research opportunities does exist into this segment, which is moving around nearby to all of us. So looking into that aspect, I will be covering these issues. Next, please. In next
3-4 minutes, I will talk about what this industry is. Because until unless you understand what this industry is, you won't be able to understand the sustainability or the career opportunities or the business opportunities into it. Then I will be talking about what is the size of this industry, where we are when we are from India, where we are in when we position ourselves at the global level. Then what are the career and what are the business prospects does exist. Next, please. Next. When we talk about this subjects, we use basically a lot of natural plant materials. It could be any part of the plant. It could be root, wood, bark, rhizome, seeds, or sometimes even a combination. Next. Or could be a combination. In itself, any part of the plant. If it has got any kind of odor into it, it means there exists a potential. There is a essential oil into it, which could be further converted into fragrance, flavor, and can add value to our life. Next. These materials can be used at 3 levels. We can use these natural material as such. Whether it's a issue of decorating any place, whether it's a 7-star hotel or a 7 crore building. When an issue comes of celebrating anything, these materials are bound to be used. We use their extracts. Even after extraction is being done, the de-oil material is being used as a decorative purposes for making a number of decorative products. For example, in case of a khas, we all know they are being used for making curtains, for coolers, for making a number of decorative products, otherwise being used for making a number of hair care or skin care products. Next, please. Citing one simple example, just to understand if you don't know where to use this material and why to use this material. If you have for example, rose petals, if you just distill it with the water, you will get rose water, which sells just for 300 to 400 rupees. Simultaneously, the gulkan, which is a combination of rose petal and sugar in a ratio of 1:2, again sells for the similar price. But the rose oil sells for 12 lakh rupees a kilo. So that one need to understand when to do and what to do. अगर आपको सही समय पर सही चीज नहीं मालूम है, तो हो सकता है बहुत कम पैसे कमाकर या नेग्लिजिबल पैसे कमाकर वहां से निकलेंगे. लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कौन सा, and again, among roses, there are 200 species, 1800 cultivars. Out of these, there are 3 which is being used by the industry. And out of these 3, one is in Egypt, rest 2 are in India. Again, among in India, one is in Kannauj, another is in Hassan in Aligarh. So you need to know which variety and what kind of a variety. Next, please. We use them as a food product. We use them, for example, we use mint, we use onion, we use garlic, a number of coriander as such in our daily life without making any processing into it. Then we use these material in one form or another into agarbatti, dhubatti, havan samagri or number of other products for cosmetic purposes. We use just simply powder, a turmeric or a sandalwood, other material, and we are using for religious purposes and decorative purposes. We do use them. It could be a temple or for decorating a building. And whenever a matter comes for respect and love, I'm just citing this. We need not to fight with these matter whenever we are going for an industrial angle. Next, please. Even after oil is being taken out, the de-oil material can goes into the de-oil material can be used for making agarbatti, dhubatti, havan samagris, extracting colors, making handicrafts, even for as a fuel when a distillation is being done. If some of you can take a time to Kannauj, which is being pending from a since long time with Mr. Ji. So we do use the distillation unit, which runs without electricity. The de-oil material itself is being used for distillation purposes. And the techno-economic says with the 60% of the material, the unit does runs. And with the 40% this material is being left, which can be powder, can be sold to agarbatti, dhubatti, havan samagri, to the fake spec people or for a scrap. And that is the way the entire
value chain keeps on running into this industry. Next, please. Fundamentally, there are three technologies which is being used for extraction purposes. We use distillation as such if the issue is of the herbs, grasses, seeds, and woods. But the moment we take the case of spices, flour, resins, and gums, we go for a solvent extraction. In a limited cases, particularly for citrus materials, for oranges and lemons, the expression is being done, but these things are not being processed in India. They are basically in Italy and Brazil, because we don't get the peel in bulk at one place because of our eating habits. Next. As a result, for this purposes, we use distillation, and particularly we use the three modes of hydro steam, and steam distillation, depending on the nature of the material, and depending on the kind of product and yield we intend to have. Next, please. So this is the list of the material what we get out of the processing of these materials. Some of you these might be known to you, some of you these may not be known to you, but in nutshell they are very simple as we eat, as we cook food. कई बार आपको लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टेढ़े मेढ़े नाम है और बहुत मुश्किल काम है इनको बना पाना, और बहुत टेढ़ी मेढ़ी साइंस इन्वॉल्व होगी इसके पीछे. सच्चाई है ये उतना ही आसान है जितना आसान हम कोई खाना बनाते हैं. आप चपाती बनाते हैं और खाते वक्त उस पर घी लगाते हैं. अगर ये घी टेबल की जगह तवे पर लगे तो क्या बनेगा? पराठा बनेगा. अगर थोड़ा ज्यादा लगे और तवा गहरा हो तो पूड़ी बनेगी. अब अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि मेरे पास ये तीन प्रोडक्ट है और तीन टेक्नोलॉजी है, एक ये सफेद रंग का, ये एक भूरे रंग का और ये एक पीले रंग का. तीन टेक्नोलॉजी है, तीनों की सेल्फ लाइफ अलग है, तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू अलग है, तीनों का ऑर्डर अलग है, तीनों का टेस्ट अलग है, और मैंने तीन टेक्नोलॉजी से बनाया. सच्चाई है कि देयर इज अ माइनर मॉडिफिकेशन व्हिच इज बीइंग डन. वैल्यू एडिशन जब हम करते हैं तो इसी पराठे में कभी हम गोभी, कभी आलू, कभी हम प्याज भर देते हैं, या पूड़ी में कुछ भर देते हैं. द वेरी सिमिलर वे वी डू प्ले हियर इन मोस्ट ऑफ द केसेस. हम पानी के साथ डिस्टिल करते हैं, हम ऑयल कह देते हैं, पानी के साथ नहीं डिस्टिल करते, एक्सट्रैक्ट करते हैं, हेक्सेन ले लेते हैं, पेट्रोलियम इथर ले लेते हैं, कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लेते हैं, उसे कभी हम कंक्रीट कह देते हैं, कभी एब्सोल्यूट कह देते हैं, कभी ओलियो रेजिन कह देते हैं, कभी रेजोनाइट कहते हैं. इट्स दैट सिंपल. सो दैट इज द वे these names are. इसको देख के बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सिंपल. और अगर आप आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएंगे वहां पर भी यही कहानी है. हम पानी के साथ बनाते हैं तो अगरबत्ती है, तेल के साथ बनाते हैं तो धूपबत्ती है. पानी तेल दोनों मिला लेते हैं तो क्रीम हो जाती है. दो चार एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं गुलाब जल का, हल्दी का, तो वो कोई हर्बल क्रीम में कन्वर्ट हो जाती है. इट्स ऑल टुगेदर वेदर यू आर यूजिंग वाटर और ऑयल और सेपरेटली. इट्स दैट सिंपल. नेक्स्ट प्लीज. हमारे पास एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, मे बी ऑफ वेनिला, मे बी ऑफ रोज, जो हम बहुत कॉमनली खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. क्या ये एक्सट्रैक्ट जो हमारे पास नेचुरली मिला है वेनिला या रोज का, हमें खाने में भी अच्छा लगता है, लगाने में भी अच्छा लगता है? हम उसे किसी क्रीम में लगाने के लिए या किसी आइसक्रीम में खाने के लिए, इस एक्सट्रैक्ट को निकालने के बाद, आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, निकाल लिया, क्रीम या आइसक्रीम में हम सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? एनी वाइल्ड गेस? हम रोज और वनीला इस्तेमाल करते हैं रूटीन में. वनीला पॉड है, रोज के पेटल्स है, हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, सिंपल, पानी के साथ निकाल लिया. हमें क्या, हम, इट्स ऑल कॉमन सेंस, उसमें साइंस लगाइएगा तो मुश्किल होगी. कॉमन सेंस, हम उसे क्रीम या आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं या नहीं, बस ये जानना चाहते हैं. नहीं कर सकते. चलिए, जो कर सकते हैं उनसे नहीं पूछ रहा है, जो नहीं कर सकते हैं उनसे पूछ रहा हूं. सर क्यों नहीं कर सकते हैं? हम रोज पेटल खा लेते हैं, वनीला पॉड इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हमें नहीं करना चाहिए. क्यों? तो सर, और रोज पेटल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये ऑर्डर नहीं होती है. मतलब रोज इस्तेमाल करेंगे, गुलाब जल नहीं करेंगे, ये कहना चाहते हैं? So suppose we are using rose petal.
So, sir, when we made an extract of a rose oil or a rose attar or a rose water, we should not use it in ice cream. Or should we use it? Yes. I have read it somewhere that when it is like when we extract it in the form of a juice or a container, then the amount of sugar is more added. No, madam, I'm asking about using extract. Definitely, when you are making an ice cream or a product, that is a part of the product. I'm asking whether we can use into a cream or into an ice cream or not. Adding sugar or not adding sugar or adding stevia is a product issue. Can we use these extract as such or not? I see that extract the level of sugar will be more. Madam, where the sugar will come when you are extracting a rose? Where there is a sugar into a rose, where there is a sugar in vanilla. Go back and look into the basic chemistry. तो एक्सट्रैक्ट किया हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम इतना जानना चाहते कर सकते हैं प्रिजर्व मतलब वो तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का इशू है मतलब अगर आपको प्रिजर्व करना है नहीं करना ये तो हमारा इशू है कि हम लेकिन कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट प्लीज दैट इज द आंसर नहीं कर सकते हैं आप सारे लोग केमिस्ट्री के बाकी कोई होता उसको या साइंस बैकग्राउंड से उनको बताना आसान है रोज ऑयल कॉस्ट यू 12 लाख रुपीज a किलो अगर साबुन की बट्टी में 100 ग्राम की बट्टी है द एवरेज डोज लेवल ऑफ ए फ्रैग्रेंस इज 0.8 to 2.3 एवरेज इज 1 इफ इट इज 1% 100 ग्राम की बट्टी में 1 ग्राम खुशबू डाली है अगर रोज ऑयल की तो कितने का हुआ 1200 रुपए का बिकेगा कितने का एनी आइडिया एनी वाइल्ड गेस अगर 1200 रुपए का बनाए तो बिकना कितना चाहिए एक मिनट नहीं बेच नहीं पाएंगे एक अलग इशू है सर मैं ये जानना चाहता हूं अगर कोई चीज एक्स प्राइस में बनती है तो बिकनी कितनी चाहिए यस मैडम 2000 में आपकी फैक्ट्री बिकेगी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा द थंब रूल गोज मेरा शेयर करने का पर्पज आपके साथ इसलिए बिकॉज यू आर वर्किंग इनटू द फंडामेंटल साइंस ये एस्पेक्ट आपको पता होता है तो आपके स्टूडेंट या आप अप्लाइड सेगमेंट में जाते हैं और वो रिसर्च कहीं ना कहीं काम आती है और नोबेल प्राइज भी अप्लाइड में मिलता है फंडामेंटल में नहीं मिलता एक्स प्राइस में बना है मैडम तो 3x से नीचे बेचने का नहीं सोच सकते अगर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर है 2x में बेच सकते हैं अगर डायरेक्ट ऑनलाइन में है तो उससे कम का कोई चांस नहीं है तो सच्चाई मतलब ही नहीं उठता सबसे महंगा साबुन कितने का इस्तेमाल करते हैं जो महंगा इस्तेमाल किया होगा 60 70 80 रुपए का सबसे महंगा साबुन जो एलिट क्लास के लिए इंडिया में बना वो मिलेनियम कर्नाटका सोप का है नेट पर देख लीजिएगा इट इज अराउंड 700 रुपीज पर पीस कोई नहीं खरीदता मैं भी नहीं खरीदता दिल में एक ही इच्छा होती कोई गिफ्ट कर दे सो अगेन कमिंग टू पॉइंट प्राइस इज अ कॉन्स्टेंट हमारा सब मेरा बताने का पर्पस सिर्फ यही आपके प्रिंसिपल साहब से भी मैं यही बात कर रहा था कि सर हम जो भी पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी पिछले 30 साल से हम भी सुन रहे हैं आप भी सुन रहे हैं आपको आप सारे लोगों में से किसी को एक बाजार में प्रोडक्ट दिखता है जो बायोटेक्नोलॉजी का हो सर बायोटेक्नोलॉजी का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बाजार में कितना है सर अगर ये हो जाता तो हम कितने सुखी होते सर ये हमें भी पता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बाजार में कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने ठेले पर कितने दुकानों पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे कहने का मतलब सर प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट का आम आदमी तक पहुंच के उसकी रीच में आना सिमिलर इज द केस विद नैनो टेक्नोलॉजी we need to work into a way that it should be commercially viable aam aadmi ko mile so that is one constant now coming to the next point there are a few more reasons हमें वनीला चाहिए आइसक्रीम में और जाड़े में भी किसी को एतराज नहीं so at low temperature the vanilla comes up and you get to feel vanilla no it's butterscotch on contrary you use vanilla in biscuit where biscuit is being heated at 175 and the moment you take a bite of a biscuit आपको लगता है वनीला है सर एक वनीला ठंडे में कूद कर बाहर आके आपको बोल रहा है मैं वनीला हूं और दूसरा 175 रुपए बिस्किट के अंदर है क्या एक वनीला काम करेगा
नहीं। तीसरा एग्जांपल, हमें साबुन में नींबू चाहिए, पीएच अल्कलाइन, एसिड क्लीनर में भी नींबू की खुशबू चाहिए। क्या बेचारा एक ही नींबू काम करेगा? सो लुकिंग इनटू दीज इश्यूज, कमर्शियल इश्यूज, द टेक्निकल इश्यूज, ये सीधा इस्तेमाल नहीं होगा। अब ऑल अगर इतना हो भी जाए, आप कॉमर्शियली अफोर्ड भी कर लें, तो क्या इतना गुलाब है कि पूरा देश नहा लेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप सारे लोगों ने ब्रिज से बहुत दिन तक नहाया, अब ये सोचेगा कि उसमें गुलाब था या नहीं था। गुलाब था उसमें, तब 4 लाख रुपए किलो का था। हाँ, नहीं सर, ऐड भी अच्छा था, गुलाब भी था, अच्छा था। जो अच्छा था वो आपने पकड़ा नहीं आज तक। सापले मेरे मित्र थे जो उसका परफ्यूम बनाते थे, और मैंने उससे पूछा कि महाराज 4 लाख रुपए किलो का है, तब कीमत 4 लाख होती थी, कि डालते भी हो कि नहीं? कह रहा सर हिंदुस्तान लीवर से हूँ, आप ऐसी ऐसी बात पूछ रहे हैं। हमने कहा 4 लाख रुपए का डाल के घाटा तो झेलोगे नहीं, ऐसी ये बात भी सच है। बोला सर पक्का डालते हैं, लेकिन कितना डालते हैं नहीं बताएंगे। हो सकता है 2,000 लीटर के ड्रम में एक बूंद। उसके बाद आपने गंगा से नहाया। डॉक्टर सीताराम दीक्षित थे, वो उसका सर्टिफिकेट इशू करते थे। एंड मैंने उनसे पूछा सर ये क्या है, आपने कैसे नहलाया? बोले कुछ नहीं, एक 100 लीटर गंगा जल ले आते थे, और फैक्ट्री की जो हमारी साइट होती थी उसके 10,000 लीटर के टैंक में 1 लीटर डाल देते थे। नहीं अभी मत हंसिए, इसके बाद गुंजाइश है। फिर हमने कहा फिर क्या करते थे? बोला इस 10,000 वाले में से 1 लीटर लेते थे, और जहां प्रोडक्शन साइट होती थी वहां रोज जो 5,000 प्रोडक्शन होता था उसमें इस लीटर 1 लीटर का उस 5,000 वाले में डाल देते थे। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब, बोला मेरा काम था कि ये सर्टिफिकेट देना कि इसमें गंगा जल पड़ा है। और बोले बोले ये तो आप लोगों ने सिखाया कि जिसमें भी डालोगे वो गंगा जल हो जाएगा। I'm just citing the example with our simple religious concept and thought, how the multinational cells. हम आप ये नहीं सोचते, मेरा पर्पस आपको यही बताने का था कि कैसे वो किसी किसी मॉडल को सस्टेनेबल दिखा के, ये सारा कुछ दिखा के, वो तो कहते हैं सर हमने एक लीटर लेते और पूरे देश को नहला देते। कॉन्सेप्ट आपका है। सो दैट इज द वे दे हैव बीन डूइंग इट। सो वी नीड टू प्रोसेस, थोड़ा में चेंज करना होगा, एंड देन वी यूज दिस मटेरियल। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। सो थोड़ा हम प्रोसेस करेंगे, देन इट गोज इनटू द प्रोडक्ट। जोकिंगली वेरी ऑफनली आई से इन कनौज कि द एंटायर बिजनेस इज बनावट, मिलावट एंड फसावट। फसावट इन द सेंस प्रोडक्ट में फंसना, ना उसको दूसरे सेंस में नहीं सोचिएगा। नेक्स्ट प्लीज। हम बहुत सारे रॉ मटेरियल यूज करते हैं, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज बाग साहब भी हैं और लोग भी हैं, सो आई विल वोंट गो इनटू दिस डिटेल। रॉ मटेरियल्स कभी आप कनौज जाएंगे या स्टूडेंट्स को लेके आएंगे तब डिस्कस करेंगे। वी यूज अ नंबर ऑफ मटेरियल्स, थोड़ी थोड़ी प्रोसेस हम बदलते हैं और अगला मटेरियल इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। थोड़ा आगे चलते रहिएगा सर, क्योंकि बिकॉज आई मेरे पास कंट्रोल नहीं है, वरना मैं ले जाता है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हम एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जब हम सॉल्वेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कंक्रीट यूज करते हैं। नेक्स्ट। इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हम एब्सोल्यूट यूज करते हैं। हमारे पास सैंपल्स भी थे, बट टाइम देखने के बाद मैंने वो रोक दिया, अदरवाइज आपको मैं बहुत सारी चीजें जो मैं कह रहा था वो दिखा देता, स्मेल करके दिखा देता, कि अगर हम कहते हैं कि रोज अब्सोल्यूट है और रोज ऑयल है तो दोनों में अंतर क्या है? रोज अब्सोल्यूट आपको 2.5 लाख रुपए किलो मिल रहा है, रोज ऑयल 12, और दोनों की खुशबू में अंतर है। लेकिन जब आप देखते तो होता, लेकिन उतना टाइम था नहीं क्योंकि थोड़ी टाइम कॉन्स्टेंट था, इसलिए मैंने वो सैंपल बॉक्स नहीं खोला आपके साथ। नेक्स्ट प्लीज। एब्सोल्यूट, यस। नेक्स्ट। सो नॉर्मली रोज का एब्सोल्यूट या जास्मिन का एब्सोल्यूट 4-5 लाख रुपए किलो का है। आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस रेंज का प्रोडक्ट आपके हाथ नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में नहीं लगता। नेक्स्ट। देन वी यूज ओलियोरेसिन, दिस इज मोर फॉर स्पाइसेस, जहां हमें फ्लेवर की जरूरत होती है। यहाँ पर हम ऑयल और रेजिन दोनों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको ओलियोरेसिन कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। Whenever there is a natural extract from a plant by its natural process. Next. So some resinous gummy material comes out. If it dissolves in water, it's gum, otherwise it's a resin. The moment we extract with water,
with a solvent, it is resinoid. Next. This is normally used for giving a stability to the perfumes. Next. Sir, next. कनेक्ट करते हैं Next, please. So then we use some of the other materials like aroma chemicals into this segment. Next. Next. We use synthetic essential oils with the combination of more or less same material just to low down the price. क्योंकि 12 लाख का नहीं मिलेगा तो हमें कुछ 5-7 हजार का बनाना पड़ता है. Next. Next. Just to sometimes match order, sometimes match test. Next. Then we use some specialty for giving certain special kind of impact either for odor or test. Next. Next. यार बहुत पका नींद आने लगी मुझे So तो ठीक कर दे वही सब we बता रहे use fragrance or a flavor. Fragrance normally हम जब external application के लिए use करते हैं तब इस्तेमाल करते हैं और flavor next please next flavor when we use for edible purposes. क्योंकि कई बार हम बहुत इंटरचेंजली बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ साइंटिफिक कम्युनिटी में भी देखता हूँ कि सर वो अक्सर अगरबत्ती का रेफरेंस लेते हैं और कहते हैं मेरी अगरबत्ती में 2 फ्लेवर है तो आपके पेट में हेडेक होना स्वाभाविक हो जाता है उस समय. So just to define कि flavor is for edible and fragrance is for external use. Next. There is a one very potential area which is least used, aromatherapy, where we are using aroma for थेरेप्यूटिकल पर्पसेस. अ ग्रेट पोटेंशियल डज एग्जिस्ट. आपके शहर में हर छोटे मोटे एयरपोर्ट पर हर सारी जगहों पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां स्पा नहीं खुल रहा हो, जहां हर्बल प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हो. बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल इस सेगमेंट में अभी भी है और ये इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा है. नेक्स्ट प्लीज. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर आप बेसिक एक्सट्रैक्शन करते हैं और कुछ एक्सट्रैक्ट करके मटेरियल निकाल देते हैं तो आपको 10 से 30% तक का प्रॉफिट हो जाता है. नेक्स्ट. When you go further,
नेचुरल और सिंथेटिक चीजों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फ्रेग्रेंस फ्लेवर केवल फॉर्मुलेट कर लेते हैं, द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन गोज टू 50 to 60%। और अगर जिस मोमेंट आप प्रोडक्ट में डाल लेते हैं, किसी हर्बल प्रोडक्ट में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, इट गोज 100% प्लस। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया द काइंड ऑफ पोटेंशियल डज एग्जिस्ट इनटू दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इसको आगे बढ़ा दीजिएगा पूरी स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज। Just to give you an idea, the size of the industry और हम कहाँ पर हैं। Normally the industry is in a micro and a small and medium size industry. A lot of cross trading does exist. Next. In fact, major producing country जो है उनमें से इंडिया भी एक है। मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ बिजनेस एंगल से और रिसर्च एंगल से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट बेसिकली डेवलप्ड नेशंस में है। नेक्स्ट। और यूएस में है, जापान में है, वेस्टर्न यूरोप में है। नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम किस मटेरियल पर काम करें। ये आपके लिए भी सवाल होता है जब आप ये काम करना शुरू करते हैं कि सर हम किस सेगमेंट, किस मटेरियल को लें और किस मटेरियल को नहीं लें। नेचुरली 300 मटेरियल ऐसे हैं जो पूरी दुनिया आज की तारीख में बिजनेस कम्युनिटी इस्तेमाल करती है। उस 300 में से आधे ऐसे हैं जिनकी खेती होती है, आधे ऐसे जिनकी खेती नहीं होती, वो जंगल में होते हैं। केवड़ा जंगल में होता है, नागरमोथा जंगल में होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस 300 में से किस पर हम प्राइमरली रिसर्च करना शुरू करें, इनमें से किसको हम बिजनेस मॉडल में लें। आउट ऑफ दीज 300 देयर आर 110 व्हिच कवर्स 95% ऑफ द टोटल ग्लोबल मार्केट। वो 110 है, उनकी लिस्ट भी है मेरे पास। और उस 110 में से 31 ऐसे हैं जो इंडिया में होते हैं जिनके लिए हम जाने जाते हैं, और 21 ऐसे और हैं। हटा दो हटाओ। नेक्स्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अगर हम ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो कुछ 10 ऐसे हैं जो 80% बिजनेस कवर करते हैं, और बचे 290 ऐसे हैं जो 20% ट्रेड को कवर करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सर पिछली स्लाइड ले जाइएगा प्लीज, द बैक स्लाइड। नेक्स्ट, द अर्लियर वन। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मेजर मटेरियल ऐसे हैं जिन पर बिजनेस नहीं हुआ और जिन पर रिसर्च नहीं। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो, और आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो, दोनों ही जगह पोटेंशियल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा डाटा था। गार्लिक ऑयल का ग्लोबल पोटेंशियल है, और मैनपुरी में गार्लिक के साथ क्या होता है हम सब जानते हैं, लेकिन हम गार्लिक का तेल निकालकर ग्लोबल मार्केट में नहीं बेचते हैं। दिस जस्ट वन सिंपल एग्जांपल, आइदर एज अ मैटर ऑफ रिसर्च और एज अ मैटर ऑफ बिजनेस। ऐसे बहुत से मटेरियल हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। द मेजर बिजनेस इज डन विद दीज मटेरियल। सर टोटल ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो केवल 12% हिस्सा नेचुरल एक्सट्रैक्ट और केमिकल्स का है, बट फाइनली इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्रेग्रेंस और फ्लेवर। सीधा लेमन ग्रास का तेल या नींबू का तेल साबुन में नहीं जाएगा। मैं दीक्षित साहब से ही बात कर रहा हूं, आपको लगता होगा पर नहीं जाएगा। बहुत सारे रिसर्चर्स, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सीएसआर लैब्स की बात कर रहा हूं, सर वो लिख देते हैं आपके लेमन ग्रास ऑयल साबुन में जाएगा, कभी नहीं जाता साबुन। प्राइस के एंगल से भी नहीं जाता, केमिस्ट्री के एंगल से भी नहीं जाता। 70% सिट्रल है जो एल्डिहाइड है, अल्कलाइन मीडिया में कौन कहां से स्टेबल करा दो, क्या कौन सी केमिस्ट्री कहती है। तो वो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उन्हें नहीं पता होता तो लिख देते हैं वो कहीं पर भी सीधा। और ये डाटा चिल्ला कर कह रहा है कि 12% हिस्सा है केवल इंडस्ट्री का, नेचुरल का। बाकी फ्रेग्रेंस फ्लेवर में कन्वर्जन लोगे तब होगा। और दुनिया की जो 5 बड़ी कंपनियां हैं जो 32 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस करती हैं, वो सब फ्रेग्रेंस फ्लेवर की कंपनी, कोई एसेंशियल ऑयल की कंपनी नहीं। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्लीज। नाउ जो काम की बात थी कि कैरियर एस्पेक्ट्स क्या है और कहां पोटेंशियल्स हैं आपके। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप इस सेगमेंट में आगे जाना चाहते हैं तो ग्रासे इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूमरी है फ्रांस में, जो 9 महीने का कोर्स कराता है, और जहां पढ़ने के बाद साल भर में केवल 12 बच्चों को पढ़ाते हैं, बट पढ़ने के बाद देयर इज अ ग्रेट ग्लोबल पोटेंशियल। नेक्स्ट। आईकैट्स है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल अरोमा ट्रेड्स, इनका मॉड्यूलर कोर्स है। 1 साल का, आप
1.5 साल में, 2.25 साल में भी कर सकते हैं, बट अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स विच इज डन ऑन अ मॉड्यूलर बेसिस। ये करके भी आप अपना करियर बना सकते हैं, या वो लोग भी जा सकते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा कोर्स इजिप्ट का, जिसके लिए फ्रांस जाना जाता है। एक साथ 2 डिग्रियां मिलती हैं आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्सेल्स की 2 डिग्रियां, लेकिन कोर्स लगभग आज की तारीख में 20-21 लाख रुपए के आसपास का है। बाकी रहना खाना एडिशनल है, बट दिस इज द कोर्स फॉर विच द फ्रांस इज वेल नोन। दिस इज डन, इस कोर्स की कार्बन कॉपी बॉम्बे में भी है, केलकर कॉलेज रन करता है। नेक्स्ट, then there is a perfumers world in Bangkok, but they run a short term course for a week or two. 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज ये रन करते हैं। नेक्स्ट, देन जापान फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर, लेकिन कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन जापानीज लैंग्वेज इज द बॉटलनेक। नेक्स्ट, परफ्यूमरी आर्ट स्कूल यूके, अगेन ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, अगर आप यूके में हैं, कोर्स करना चाहते हैं जाकर, देन दिस इज अ गुड पोटेंशियल। नेक्स्ट, then there is another school of chemical and life sciences in Singapore. They do a fantastic very good course, लेकिन ये 3 साल का है। प्राइस का अंदाजा आपको सामने डॉलर देख के लग रहा होगा। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज व्हाट वी डू, इट्स अ 1 year कोर्स एट कन्नौज आफ्टर ग्रेजुएशन और इवन आफ्टर क्लास 12। और जितने भी बच्चे हमारे पास से निकल कर जाते हैं, वो एग्जाम होने के पहले प्लेस हो चुके होते हैं। पिछले साल के जितने बच्चे हैं वो सब प्लेस्ड हैं, और 5-6 साल के बाद ऐसे भी हैं, और पिछले साल के 2 बच्चे इंडिया से बाहर भी, एक ओमन में है, एक दुबई में है, और 4-5 साल बाद किसी की भी सैलरी 1-1.25 लाख से कम नहीं होती। दे आर वेल प्लेस्ड इनटू द इंडस्ट्री, एंड द फीस लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। नेक्स्ट, देन देयर इज अ केलकर कॉलेज, जो मैंने आपको बताया था, ये 2 साल का कोर्स है, बट दिस इज मोर अ बिजनेस एंगल कोर्स देन अ टेक्निकल कोर्स। नेक्स्ट, एमटेक का इकलौता कोर्स जो आईसीटी मुंबई रन करती है, लेकिन केलकर के बच्चे और ये दोनों के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जरूर आते हैं। नेक्स्ट, then these are the organization those who are into research segment. This is just to give you an idea. CMAP है, NBRI है, ISBT पालमपुर है, IIIM जम्मू है, नीस जोरट है, आनंद में ICR का इंस्टीट्यूट है, DMAPR, कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, स्पाइस बोर्ड है, जिनके साथ आप कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं और रिसर्च और इस सेगमेंट में जा सकते हैं, जाके आप आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, this is was about the career. I will just take 2-3 slides for business and then I will move. Next please. हम कितना पैदा करते हैं और कितने का पैदा करते हैं, हम ये बात करें। और कई बार आप फ्रेग्रेंस की बात करते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि हम इंडिया बहुत गया गुजरा और बहुत पिछड़ा देश है जहां लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है, यूरोप में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसको और बाप पिताजी बताते हैं कि बेटा तुम परफ्यूम लगाओ, अच्छा कॉस्मेटिक्स लगाओ और जाओ, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और हम उस देश में परफ्यूम बेचने की कोशिश करते हैं, जब बच्चा जब पैदा होकर बड़ा होता है और जैसे ही इत्र लगाने की कोशिश करता है, हम कहते हैं इत्र नहीं लगाना, चुड़ैल पकड़ लेगी। तो सर वहां पर परफ्यूम बेचना कितना मुश्किल काम है आप सोच सकते होंगे, बट स्टिल द न्यू जनरेशन इज कमिंग अप, द सिनेरियो इज गेटिंग चेंज। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। सो ग्लोबली वी स्टैंड्स एट नंबर 2 पोजीशन अगर हम नेचुरल मटेरियल्स की बात करें। नेक्स्ट, मेजर स्पाइस ऑयल, मेंथा और फ्लोरल एब्सोल्यूट्स के लिए हम जाने जाते हैं, सैंडलवुड के लिए जाने जाते थे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी लॉस्ट। नेक्स्ट प्लीज, हम कितना पैदा करते हैं और किस सेगमेंट में जाता है, वो उसका ब्रेकअप ये है, किस सेगमेंट में क्या मटेरियल जाता है। इंडस्ट्री का साइज अगली स्लाइड में दिखाऊंगा। नेक्स्ट, टोटल साइज लगभग 2450 मिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें मेजर हिस्सा आज भी मिंट का है। पूरी दुनिया का 90% मिंट हम इंडिया में पैदा करते हैं, और इंडिया में जितना होता है, लोग सब आखिरी 2 स्लाइड बस, जितना होता है वो इंडिया में हम पैदा करते हैं, और इंडिया में जितना होता है उसका 80% हम उत्तर प्रदेश में पैदा करते हैं, वो भी 5 जिले के पैदा करते हैं। और आज की 25 साल पहले हम चाइना से खरीदते थे, आज हम चाइना को वापस बेचते हैं। सो दैट इज द स्टेटस। नेक्स्ट प्लीज, ये फ्लेवर का बैकअप है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप जिस भी सेगमेंट में बिजनेस करना चाहते हो। नेक्स्ट, ग्रोथ रेट इज अबाउट 10 to 11%। दैट शोज कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या कैरियर बनाना चाहते हो, दोनों जगह इक्वली बढ़िया पोटेंशियल है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्लीज। अगर आप छोटी सी यूनिट लगाना चाहते हैं फील्ड में बिना बिजली के तेल निकालने के लिए, तो 7.5 लाख रुपए में यूनिट लग जाती है। एक यूनिट आप लगा लें तो 30 एकड़ में अगर आपने खेती की तो उसका तेल निकालने के लिए काफी है, बिना बिजली के चलती है। और तेल बिकने की समस्या कहीं पर भी बिल्कुल नहीं है। आपको डाउट हो तो मेरे पास आ जाइए। नेक्स्ट प्लीज। अगर इस थोड़ा एडवांस लेवल का सेटअप है, ये कन्नौज में हमारे पास लगा हुआ है, ये स्टीम डिस्टिलेशन है, इसमें थोड़ी ज्यादा कॉस्ट आती है लेकिन यील्ड ज्यादा है। लगभग ये 37 लाख रुपए का सेटअप है, लैंड लगभग 2500 स्क्वायर फीट के आसपास। नेक्स्ट, अगर आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाना चाहते हैं, नेक्स्ट प्लीज, तो लैंड लगभग 4000 स्क्वायर फीट और इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 1 करोड़ प्लस। नेक्स्ट, अगर आप कंपोनेंट फ्रैक्शनिंग कॉलम पर अलग करना चाहते हैं तो लैंड रिक्वायरमेंट इतनी है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 20-22 लाख के आसपास लगेगा। नेक्स्ट, फ्रैग्रेंस फ्लेवर फॉर्मुलेट करके बनाना चाहते हैं तो लैंड रिक्वायरमेंट लगभग 2 से 2500 स्क्वायर फीट, 50-60 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। जीरो इसके बाद बहुत सारे लग सकते हैं। नेक्स्ट, अगरबत्ती सुनने में बहुत छोटा बिजनेस लगता होगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 10,000 करोड़ का टोटल बिजनेस है इस देश में, 15% की ग्रोथ रेट से 83% पेनिट्रेशन है। आपके घर में शायद शैम्पू नहीं होगा लेकिन अगरबत्ती होगी। नेक्स्ट, सिमिलर इज केस विद द धूपबत्ती। नेक्स्ट प्लीज, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, नेक्स्ट, next please, continue please. So there is a potential, please go ahead. Next, that's all my मेरी अगली स्लाइड में मेरी ईमेल आईडी है, इन केस ऑफ आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए आइदर विद रिस्पेक्ट टू द कैरियर और विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस, वी आर फेयरली ओपन। कन्नौज बहुत पास है, बहुत दूर नहीं है। एंड द वे वी वर्क, एक लाइन में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, वी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, but there are very few organizations in the country and we are among one of them. This is our 12th year. अगले साल 1 अप्रैल से ये 13वां साल शुरू हो जाएगा। हम गवर्नमेंट से न अपनी सैलरी लेते हैं न मेंटेनेंस का पैसा लेते हैं। We are financially self-sustainable organization. That is the way we do it. That's all. Hello. 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 Now I will heartily welcome our special guest, Dr. D.S. Bagh sir, but after a brief introduction. Hello. Dr. Dibyendu Shekhar Bagh stands a distinguished scientist of polymer materials at the Defense Materials and Stores Research and Development Establishment, DMSRDE, a part of DRDO Kanpur. Boasting over 25 years of extensive expertise in the realm of polymer materials and technologies. Currently serving as the additional director and head of the polymers and rubber division at DMSRDA. Dr. Bagh leads significant projects including advanced polymers and their technologies and polymers and nanomaterials. For defense applications, his leadership extends to collaborative research projects with esteemed academic institutes such as IIT. Dr. Bagh has continually showcased his dedication to innovation and academic excellence, evidences by numerous awards, including the prestigious Science Day Gold Medal, Laboratory Scientist of the Year, and the National Award for Technology Innovation. With a prolific publication record and contributions to esteemed journals, technical reports, and conferences,
So, Dr. Bagh is president of Kanpur Mahanagar of Vigyan Bharati. So, over to you, sir, for your precious. Thank you, madam, for your nice introduction to me. Today's chief guest, Mrs. Kumkum Sarup. Probably, madam, she has left us. Anyway, from the connection. Today's guest of honor, Dr. Shakti Vinay Shukla, expert speaker from DBT, Dr. Sudhir Pratap, Principal Dr. Arun Kumar Dixit, today particularly the convener of ISCA, Indian Science Congress Association, Professor Sudhir Kumar, Professor Sunil Mishra from DAV, Professor Kalra, and all other faculties of DAV College. मैं प्रसन्न हूँ आपका DAV प्रांगण में. I used to laugh repeatedly to come to DAV College. Although Bengal is my Janmabhumi, I consider Kanpur my Karmabhumi. And within that heart of Kanpur, DAV is such a educational institute, one of the major and oldest and premium research, premium college and university of Kanpur. And your love and affection gives me immense pleasure, and that's why I may have जो बात बताया कि मैं प्रसन्न हूँ ये विज्ञान प्रांगण में. Anyway, but today's topic is altogether different. लेकिन today's विडंबना मेरे लिए यही है कि today I stood in front of all faculties. Generally, I used to come to learn in the colleges, universities from the teachers, but today probably I have to teach to the teachers. So my humble request to you, don't consider in that respect. I will speak some of the words, some of the thoughts, which we can share and discuss to each other. And if at all, in my speaking ability, if you find that I am taking the class like a teacher, considering you as a student, so please excuse me. With this, नहीं हो रहा है? ये लगाना चाह रहा हूँ. एक्चुअली पे स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी. एक्चुअली मैं इसे निकालूंगा तो ये बंद हो जाएगा. ये लगा. ये वाला. हाँ. Today's topic what was given to me, that is altogether different. That is challenges in sustainable development. But the rest of the space is remain vacant. Challenges is sustainable development in what? While I was coming, I was thinking that the forum is open to me. I can conclude, I can include in which way I like to make it. Sustainability is a really is a matter of concern today. And some of this with some of the slides I will show you. No, you cannot get it. Leave. How you will get it from my pen drive? जस्ट लीव इट सर. पहले मैं गूगल मीट के थ्रू जाएंगे. कुछ मिनट है. जूम के थ्रू पहले ओपन करेंगे. जस्ट लीव इट सर. ओके, ये वाला. अच्छा. ये डबल
It will take time, na? Your screen share is loading. Go wait. Correct. ना स्टॉप को ठीक है करो आगे 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 क्यों स्टॉप कर It's okay. It's working. Open, open. Let's just wait. Slowly. पूरा और इससे होगा हाँ यस आप इससे एक साथ 4-5 दफा तो कैसे ये आना चाहिए थोड़ा हो सकता है स्लो या फिर से मैं स्टॉप करके दोबारा करूँ नहीं तो फिर तो या इंटर करके काम एंटर करो मैं थोड़ा बंद करके फिर से शेयर करता हूँ सिर्फ एक ऑडियंस को सुनाइए पूरा देश को सुनाने की जरूरत नहीं ऐसा ही प्रॉब्लम होता है 2 जगह खुला हुआ है एक तो बंद को Yes. Okay, good. Sorry for interruption. Although we have created lot of gadgets for us, you know, but gadgets are not controlled in our hand. So what I will be talking today, mainly the challenges for sustainable development. Development of what? Something remains unuttered. I consider I will take in my own way. In one way, I'll be talking, but basically, as you know, I am from defense sector. So in a defense R&D organization, materials, and in order to make materials, you need to have some of the processes. So both the aspect where your challenges for sustainability and the sustainability is such a term at the end of the lecture, I hope that I will give you some of the idea how the challenges and where are the position where we have to take care to meet out the challenges and to achieve the target for our sustainability. Some of the things with some of the examples I will cover, but in my layman language, always we consider that fight, win, and sustain. Where to fight? In particular case, our concern is the energy, environment, and competitive cost. Because in anywhere, if your materials is cheaper, that will be sold earlier than the costlier material. So where to fight now? How to fight for the sustainability? There are 3 important things: is the materials, because materials may be starting materials to develop some of the other product or component. You need to convert that material to a useful product. You have go into certain processes, and during the conversion process, you need to have to apply the energy. So these are the 3 things only. If we judiciously select and consider all the 3 things, you will enter and end up with the idea of the sustainability. In materials, as you know, the natural materials are sustainable material, eco-friendly, friendly to the environment and to the earth. So always in the sustainability concept, it is considered your starting material, you should take it from the nature. So in case of material, you can take bamboo, wood, hemp, wool, so many things.
And the process what you will adapt, that process should be the green process. Or during chemical process, as you know, that there are a lot of chemicals or fumes or the solvent, all the waste discharged into the environment, which is creating problem to our system or our environment, where living is a big question today for our sustainability too. So if you have to zero waste process, we have to adapt and green synthesis and energy. As you know, that the fossil fuels, that resources are limited globally. I am not talking about our country only, globally. Now, as we extract the oils, petrols, and all those things, two way that the energy is being consumed slowly, it is being depleting. On the other hand, during the burning of the process, suppose a car is going on and all those things, by burning of the petrol, the carbon dioxide, carbon monoxide, nitroxide, whatever it is generated, we are throwing into the environment. That is also creating problem to us to become sustainable. So it is implied today that we should use the renewable energy, that solar energy, wind energy, biomass, hydropower, tidal energy, geothermal energy. In energy aspect, lot of work is being done. Then another aspect is how to fight to the sustainability, is the achieving sustainability and environmentally sound practices. Another way that you have to minimizing and minimizing the waste or managing the waste. Again, these are in these two slides, I have sum up all the ways and means how to make our material system and living environment to become sustainable. Minimizing waste, and if at all we have to throw it out, some of the carry bags and all those things. One example I will be giving this thing, you may recycle it or reuse it, or in some cases you convert that waste into a biofuel, or from solid waste and plastic waste. So the environment and cost, these are the two another aspect where we have to consider this. We have to take care to make a sustainable environment for our sustainable living. So by definition, sustainability is the ability to continue over a long period of time, but does not define how much time. I will give some of the example how sustainability sustains with time. Sustainable materials are considered the materials that can be produced in required volumes without depleting non-renewable resources, and preferably using renewable resources without disrupting equilibrium of the environment. Also, sustainable chemical processes technologies are designed to develop materials and components in a ways that could not cause harm to the humans and to the environment. Now, if you consider in the material requirements, nowadays our demand is not restricted and controlled in by mind. Day by day, so many lucrative things are being demanded, whether it is in defense technology or in our materialistic world also. The multi-mission, the automation, and our expectation to fulfill the automation and multi-mission objectives for cutting-edge applications in defense, aerospace, and space program, railways, energy harvesting, biomedical. In all cases, multi-mission objectives should be fulfilled by a single material, like a mobile phone. Mobile phone nowadays, camera nobody is using. Even watch also we are not using. Only a material of only a system like mobile is fulfilling the so many purposes. So it is our demand. So scope of the material, touch screen has come. Earlier it was not there. Today mobile is everywhere. Telephone is that's why mobile is considered to be a disrupting technology, because it has totally wiped out the telephone and telephone line and all those things. So a technology is a sustainable technology which can totally wash out any of the existing technology and stand in its own feet to serve all our need and purposes. So this is our expectation.
Now I am giving you some of the examples. The one is evolution of aerospace materials and the composite materials and smart and self-healing materials. Only small size. You consider it is the example what I am giving. It is a limited story. Now you see that when the first flight by John Wright brothers flown in aircraft in 1903, it was totally made up of wood and fabric. I am talking about the title is not coming anyway. This is in the aerospace industry how it is going on. Then 100% steel in 1915. 1917 is the 100%. It is an alloy Durala. Then 1949 100% aluminum alloys. Now 4% polymer composite started introducing in 1972. 1987 only 15% polymer composites are used in in a aircraft. Our requirement is that it should be lighter weight so that it can the fuel efficiency and so many things. Now you see that in LCA in our light compact aircraft in India 45% in composite, and nowadays Boeing 787, if you consider Boeing 50% composite are being used, and it is considered that 80% composite will come up at 2030. So a industry is going on now. It is a slow changing process. Sustainability is a matter of question. We cannot stand still. It is a continuous process of challenges is everywhere. Today, what is sustainable if you consider, say, before 2000, telephone, we used to visit twice, thrice in the telephone office and all those things, even though we could not get it. Today, nobody is going there. So it is a time dependent phenomena. And now you see, and they see that in 787, in the Boeing 77 aircraft, 50% the composites are being used, and 2030, 70 to 80% is expected. Because this is the trend, because as I told you, that to increase the fuel efficiency, to improve the aerodynamic performance, to away from the using aluminum in airframes, designer flexibility, reducing noise, and benefit to 50% weight reduction over metal and metal alloy. And if you consider, if you can reduce an aircraft 45 kg reduction from each aircraft in a fleet of 500 can result up to $5 million in annual fuel cost. So reduced cost, emission reduction, because ATF fuel, again, all the aeroplane turbine fuels what are being used, that is also from the not from the renewable resources, it is from the fossil fuels. So during the burning process, see, the environment is so big and it is flying in above. We do not know how much it is being polluting to us. We can see here only where we are living. So these are the three aspects which are considered to be the cause for this one. And it is the LCA. You can see that in light combat aircraft, 45% age composite is being used, and weighing only 9 ton as compared to the 90 of the similar type of aircraft elsewhere in the world. And these are the composite parts you can see. This is the glass fabricated composite, Kevlar composite, it is carbon composite, only this portion is aluminum. So this is the way of conjunction. Now you have heard about the flight is going, that flight data decoder means the black box. Black box where we are also working something. Black box for LCA we started with this one. 4.8 kg, only memory was 96 MB. In the first indigenous in our country, we made it FDR for LCA pages. Now the reduction has been taken place. Now simultaneously with this one 1.4 kg, where even the memory is 64 GB. So as per our demand, we are increasing the capacity of its memory. Simultaneously, we are trying to reduce the weight
because weight is a concern, particularly in case of aircraft. So in this process, you can see the sustainability is a continuous growth process leading to our favorable situation, whether situation in case of its performance of an aircraft or or the cost saving or simultaneously the protecting the environment. Now, the next generation of future aircraft is the stealth composite, where it could be invisible, it could not be caught by the radar of the enemy, and advanced thermoplastic composite is coming out. You in aircraft after use of 30 years, say, when if you dump it, in case of thermosetting, it will be very difficult to recycle and reuse. So it is again going to create a problem to the environment. So thermoplastic, as because it is having recyclability, so thermoplastic composite is coming out in a big way, and they already AMCA has also been sanctioned by the government, and thank God that we also started first work in the project stealth material for airborne platform has completed. It was a multi lab. Not only our DMSRT, other labs were also involved. This project is completed and it was pending from the government side, but recently AMCA has been also sanctioned by the government. So next version of LCA of Tejas, we are going to make it that is advanced light, advanced, that was light compact aircraft, it will be advanced medium compact aircraft. Now, they see the future in globally. The future of aerospace industry is targeted with the concern of the safety goals, environmental goals. So the 75% reduction of carbon dioxide emission and 90% reduction of the nitric oxide emission. The perceived noise emission of the flying aircraft should be reduced by the 65%. Air vehicles are designed to manufacture to be recyclable, and safety goals less than one accident per 10 million commercial flights. And air vehicles are resilient by design to current and predicted on board and on ground security threat initially. So development of aerostructure is like this, and it is considered to be a drop of water where dragging force is almost trying to reduce, and a drop of water taking a shape in a lip. Now, another example what I am giving, that you see that our transformation is a material technology towards sustainability. Earlier in the Mughal period and all other period, that soldier used to use the steel jacket. You know? It sustained up to polymer came up into the 1970. Then we started the bulletproof jacket, what is called, that is based on Kevlar. This Kevlar, body armor, Kevlar is considered to be 5 times stronger than steel, Kevlar fiber. So when Kevlar fiber came into the market, because iron body protector armor is a very heavier, very difficult to wear and fight. So that has been replaced with the Kevlar one. Then Kevlar technology sustained up to 2010. There are so many demerit of Kevlar also because of coming they based on ultra high molecular solution. So technology is changing in such a way that iron has gone now. Kevlar, they ruled the era of body armor, say 2070 to 1970 to 2010. Now at present, because of some of the limitation and all those things, the technology, the ultra high molecular quality, and DMSAT Kanpur has that the main R&D center from where PPJ was developed. Now you see that it can protect the AK-47 also. Now in my department we have developed that advanced riot protection suit. In riot generally earlier used to use that stone, butter, lati, danda, and nowadays in riot situation, katha is being used also. So we have developed an advanced version where it can protect the 9 mm bullet, 9 into 19 mm bullet. Already it is published in our DRDO website, and we have so many people they are expressing their interest
there are a lot of demands from the Ministry of MHRD and the other paramilitary forces. They have a lot of demand. So we'll give the technology soon. Now, another aspect what I will do, how much time I have? 5 minutes I will take. The self-healing materials, smart and self-healing materials. We used to call and we heard the smart and self-healing materials. Intelligence, how do you consider that intelligence? Intelligence is considered that sensitivity and observation. A boy is intelligent, girl is intelligent, means that they have high power of sense and observing ability. So smart, what in which way I define that a boy or a girl which have the not only the sensitivity and observation, means the self inspection capability, simultaneously he should be able to respond adaptively. So in this case, the materials are being R&D is being done, and so many things are working in this field because our consideration is nowadays the automation. We are being sophisticated nowadays. Anyway, in self-healing polymer, that concept come up in 2001, where in a material in which way our bodies can't automatically heal. So with the same concept, that in a material of polymer composite, putting the microcapsule, which is considered to be containing that healing agent, by action of cut, when it goes, that microcapsule will be broken and liquid healing agent will come out. When it will come in contact, the embedded catalyst, it will get polymerized. So they automatically heal. So when this was published in Nature, there are a lot of halla in the news and all those things, that yes, like a body, a material could also have the capability to self heal. That is in 2001. Then they have achieved only the 70% healing efficiency. Then the chemistry came up with a reversible Diels-Alder reaction, imine reaction, Diels-Alder reaction, that reversible bond, where even if you cut it will cut it, and again it will be rebonded. In ionomeric one concept, what we are working nowadays, that if there is a ionomer, chemistry people, all people are having this background will understand. Just like a bullet go and penetrate the other way. During penetration, there is a force. Some thermal energy will be generated. In that thermal energy, polymeric chain will be loosened, and the loosened polymeric chains will be coming one another. Then, if there is a ionic bond, then it will again heal. So with this concept, we are also working, and these are some of the data and how the mechanism is taking place, and we have achieved the more than 80% self-healing efficiency. In this case, in hydrogel also we have shown that 69% self-healing efficiency. Now, the both self-healing and morphine functionality, there is a lot of demand in the field. That US Defense Department estimating that the global market of unmanned air vehicles, where pilot will not go, is a worth of 55 billion by 2030. Now, based on the self-healing materials, it is predicted that we have to fly our aeroplane like a bird or butterfly. We have to construct vibration control, self-repair bridges or aerostructure. We have to make possible that our handgun will fire only it will be in the hand of owners. So many predictions are predicted in the field. Some of the things are coming out and some of the things are going on. Now, the self-healing material, as you know, it is also a sustainable material because it will minimize the use of other materials again and again. It will stand still. In building and construction engineering also, the self-healing materials are considered to be, and that is a sustainable material. So this class of materials and technology could be considered as sustainable materials. Now, the two more things I like to tell you, that in a global crisis, the resources of feedback, what I told you, that's why we consider that we have to take the renewable resources. I am coming to summing up, and the clean environment. So the process what we have to adapt for our need of any product, that product should be energy efficient process, it should be industrially environment,
industrial environment friendly, sustainable development with the green chemistry. That means whatever solvent you will be using, let it say for other than taking your toluene as a solvent, toluene that lot of fumes will be coming out, so, or something like that. That will pollute the problem. If you take that solid carbon dioxide as a solvent to do your reaction, later on what will do? Solid carbon dioxide, it will go into the you have taken from environment, you have thrown into the environment. So this type of so many concept and is there. Now this thing is the plastic we all know, starting from the morning toothbrush, going to the bathroom in a plastic bag, and ultimately the night you are going to the carbon bed or made out of plastic. Not only made out of plastic, even in the hard valve. So in any way, you cannot separate it out the use of plastic from us in our life. So it is used all the basic need, food, cloth centers, medical needs, luxurious needs, and technology. So definitely it is a gift of science. Simultaneously, whenever you see that it is a curse to the society. So plastic, it is a gift of science or a curse to the society. That is a question of debate. But the handling is a greatest challenge for sustainability, because what we have created, we are handling. We can use it for our good purposes. We can throw it to dump to the environment. Plastic don't say that you throw it so that I will create a problem to your environment. It is us. So nowhere, even today, we talk about the sustainability of materials, energy, resources. Nobody talks about. That is my second part, which might probably that I have missed that file is in this. The second part is the sustainability for ourselves. Nobody talk about the sustainability of ourselves. Now probably that file is not there, but I will tell you. And this thing I will not want to show you anyway. The summary, no, it is not there, but I will sum up anyway. In this pen drive I forgot to take it in pen drive over here. So the second part is that we do not talk about. In the summary I must conclude, in the first part of my lecture was the materials and challenges for sustainability for materials and chemical processes. I hope with a brief time, I have tried to give you what I feel so, a concept, how sustainability and their challenges. And challenges in every time and every moment, because sustainability term changes with time and everything is changes with time. But with my example with the plastic, in one way it is a gift to this science, another way it is trust to the society. In this debate I am not going to the debate, but the thing, my dear audience, I wanted to take your 2 minutes attention, that we do not talk about the sustainability of ourselves. As plastic does not say you throw it, make garbage to the environment. So it is equally important to have a
জয় जॉय तब सुनिश्चय। मैंने मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बंगाली के साथ हिंदी में अच्छा मिलता भी है, समझ जाता है। मेरा बंगाली टोन में भी हिंदी भी आ गया और हिंदी टोन में भी बंगाली आ गया तो समझ जाते हैं। सूर्य ज्योति मेघाच्छन्न मेघ में ढाका हो जाए है, इवन दो यू होल्ड ऑन brave heart, be heavy to hold on. Tobo jeno joy, tobo jeno sunishoy. So that much patience we had, and we have the adaptability that we have to make our student, our future generation sustain. Whatever sustainability we talk about, looking into the energy and environment, we have to keep it for our next generation. Simultaneously, it is equally important to discuss that the sustainability of their character, so that, as I told you, the Vivekananda's Vani, that they have to feel every moment that the difficult situation make me strong and making me strong and stable, so that only then can survive. Simultaneously, परमहंस योगानंद का एक टाइम ये कोट मेरा याद आ गया, मैं वो भी बोल दे रहा हूँ that the failure is the time to sow the seed of success, or to sow the seeds of success, that courage, that type of sustainable student. My request to my professors that you try to take it out in that way. With this, I definitely might must thank to really all the faculty and all the and to share some of my perception in terms of challenges for sustainability, in terms of materials and technology, as well as the sustainability for all of us. With this, thank you all. समय समय पर इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करती होती है। इसी क्रम में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आज हम लोगों को बुलाया है और उनको सम्मानित करेंगे, जिससे कि उनका उत्साह बढ़ता है। तो कानपुर वर्मा ओंकारेश्वर इंटर कॉलेज से छात्र हैं। मैं शुक्ला सर से अनुरोध करूंगी कृपया तालियों से सेकंड प्राइज ऋषभ सक्सेना डीएवी इंटर कॉलेज के छात्र हैं, उन्होंने पाया था। मैं डॉक्टर भास्कर से अनुरोध करूंगी चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ था, जिसमें फर्स्ट प्राइज होल्डर आकाश डीएवी इंटर कॉलेज के छात्र हैं। बुलाती हूँ कृष्णा भी सेकंड प्राइज होल्डर है, लेकिन वो आज उपस्थित नहीं है। उन्हें हम सबकी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। आज के तीनों स्पीकर डॉक्टर सुधीर प्रताप सिंह सर, जो कि हमारे बीच ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं संक्षेप में उनके विषय और उनकी उपलब्धियों के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। फिर उसके बाद सर अपना लेक्चर देगा। Dr. Sudhir Pratap Singh sir is a highly distinguished scientist with a remarkable track record in the field of agriculture biotechnology. Currently, he holds the prestigious position of Scientist Dean at the Center of Innovative and Applied
bioprocessing in Maholi, India. Dr. Singh's research focus on unlocking the potential of microorganisms for production of valuable biomolecules. His group delves into extreme environments, thermal springs, cold lakes, and even fermented food to discover novel genes encoding enzymes with superior properties. Through his innovative research, Dr. Singh's team has identified and characterized a wide range of novel enzymes. These enzymes have paved the way of the biosynthesis of numerous essential biomolecules. He is a fellow of both the International Society of Energy, Environment and Sustainability and the National Academy of Agricultural Science. He has also received numerous prestigious awards with a prolific publications record, including 74 research papers, 12 patents, and 8 review articles, and a remarkable H index of 31. So, over to you, Dr. Sudhir sir. Please unmute, sir. Sir, please unmute yourself, sir. Yeah, slides thank are you very visible. much. The organizers, thank you very much, ma'am, for a great introduction. Yeah, now I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Thank you very much. Yeah, thank you for the introduction. But yes, I need to introduce myself again that I am Sudhir. I am working as a scientist at Center of Innovative and Applied Bioprocessing. This is an institute under DBT, Department of Biotechnology, Government of India. I will take you a short tour towards my institute. For example, this institute is located in the northern part of the country, in Punjab region. And in Punjab region, you know Mohali, which is famous for its stadium. But in Mohali, there is a knowledge city. Why it is called as knowledge city? Because there are multiple institutions. If you see here, there are multiple institutions placed very closely. For example, National Agri-Food Biotechnology Institute, Center of Innovative and Applied Bioprocessing. These both institutes belong to DBT and they are present in the same campus. Then we have nearby Nanotechnology Institute, INST, then PBTI Mohali, nearby institute, then Indian School of Business, very reputed organization, then NIPER and ISR Mohali, Punjab University. So these all, because of all these cluster of institution, it is called as Knowledge City at Mohali in Sector 81. So now this, that's my institute looks like. This is the front view and side view of my institute. You all are welcome to please be there sometime. This slide is basically shared by, basically I have borrowed this slide from the founder director of this institute, Dr. R.S. Sangwan, who decided the vision of, who created the vision of this institute, that this institute will work to add value not only in primary processing product, for example, seed, fruits, vegetables, but also in secondary agricultural products should be developed. Secondary agricultural processing should be done. For example, a lot of agricultural biomass is generated after the primary processing of seeds, fruits, and other agricultural products. So in those bioproducts and waste, how value can be added, for example, rice straw can be converted into some good products. So for that, this institute was made, and majorly these are four areas on which this institute, different scientists are working. And the fourth area belongs to me. I am working on the aspect of synthetic biology, biotechnology for low volume, high value products. Those products are generated in low volume, but their value is very high. And yes, industrial enzymes are required for making
these kind of biomolecules. But yes, in a recent cabinet decision, these both the institutions, NABI, National Agri-Food Biotechnology Institute, and CIEB, Center of Innovative and Applied Bioprocessing, which are in the same campus, they have been decided to merge in one institute, and the name of that institute will be National Agri-Food Biotechnology and Biomanufacturing Institute. And this biomanufacturing word is coming from CIAB at present, the present name, the present institute CIAB. Now, as far as my research area is concerned, the statement of problem which actually initiated my research on this area is the increasing incidences of obesity and diabetes in India. You know that by habit, by tradition in Indian culture, we eat sweets for everything, on every good occasion or bad occasion, whatever. So also these sugar sweetened products, these highly processed products like pizza and all, they are rich in sugars, and these industries like Coke industry and other industries, they are looking towards India as their very good customer, because these sweeter the production, the sale of these sugar sweetened products are reduced in elite countries, and now they are looking towards countries like India to sell their product. So because of this, obesity is increasing, and India has become the capital of diabetes. So at present, the sweetness which are available in the market are like these are aspartame and all. These are sweeteners which are present in the market. But yes, they have side effects. They have undesirable taste. They cannot be used as a bulk sugar. Bulk sugar. What is bulk sugar means? The sugar which is used in bulk. For example, if you purchase काजू की बर्फी में काजू कितना होता है और चीनी कितना होता है. चीनी is used in bulk to make काजू की बर्फी. So likewise, these मिठाइयाँ जो भी बनती हैं बादाम की, काजू की, they have lot of sugar to add weight in that, so that काजू का cost थोड़ा कम. Otherwise वो 600 रुपए किलो कैसे मिलेगा? तो इसलिए what I thought to when I joined this institute in 2015, we thought to transform these low value sugars which come from biomass into high value functional biomolecules like allulose, trehalose, and on these molecules have anti-diabetic potential. So one such molecule, allulose, it is called as dream sugar. Why it is called dream sugar? Because it has low glycemic index. Consumption of allulose reduces the blood glucose level. Even if you are mixing it with table sugar, your blood glucose level will be reduced. The lipid accumulation, it has anti-dyslipidemic effect. Means the lipid accumulation will be reduced if you are eating allulose, which is a sweet molecule. It has 70% sweetness as compared to table sugar, but its calorie is very reduced, about 0.2 to 0.5% kilo, means about 3% of table sugar, or no. So you are admin, you can mute them. Okay. Thank you. So yeah, because of reduced calorie, these are important molecules, and you can see here in picture where it is actually allulose is biosynthesized from D-fructose. So it is an epimer of D-fructose. You can see at third carbon of D-fructose, the position of hydroxyl group is changed. So this change happens by the catalytic action of one enzyme, D-allulose 3-epimerase. And there are different players, industries which are making allulose. You can see the packets of allulose which are present, but you will not find in India, because there is no manufacturer of allulose in India. But yes, China has started producing allulose. So looking into this, and the major problem for allulose industrial production is poor thermal stability of enzyme. So when I joined this institute, I tried to improve the thermal stability of D-allulose 3-epimerase, which is coming from Agrobacterium tumefaciens, which we use. Most of the plant biotechnologists use Agrobacterium tumefaciens for transformation of plant.
to develop transgenic plant. So it has DLO3 enzyme. So I extracted it, but and I introduced a tag, SMT3 tag, which is a very stable tag, very stable molecule, protein molecule. And addition of this tag improved thermal stability by several folds. Means the native enzyme is having 63 minutes of half-life, but this after introducing this tag, its stability was improved several fold, and it could reach to 943 minutes of half-life from 63 minutes of half-life. This was the first report of DLOs on DLOs liapinase from India, made by our laboratory for the first time, and this patent was also granted and licensed to one industry, but yes, still not in the market. Then it was immobilized to some matrix to nanobioCatalyst, and immobilization further improved its thermal stability to another 4 folds. This was also published, and it was the first report for nanoparticle immobilization of DLO3 probably in the world. It was the first report. Then we tried to use this enzyme to transforming fructose into D-allulose in fruit juices, even and we are successful. We transform. We can see the HPLC analysis is detecting D-allulose in fruit juices. Then we thought that can we make D-allulose from the waste, because India is one of the largest producer of fruit and vegetables. In fact, second largest producer of fruit and vegetables in the world. So so what we did that we extracted fructose from these waste, and about 30% of the fructose was converted into D-allulose, and we have shown that how D-allulose can be made from for example, this is quinoa industry waste, and we have made D-allulose. Its another name is D-cyclose, and HPLC and other analysis have confirmed that yes, it contains D-allulose, and we generated successfully from waste. Then, because this enzyme we made, it was a known enzyme, and it was a from known source, we thought to explore different ecological niches. For example, hot springs of Himalayan region, of Tatapani Chhattisgarh region, cold springs, cold lakes of Himalayan region, then acidic copper mine region in Madhya Pradesh, and we extracted the genetic material from these ecological niches, and we did in-depth analysis of metagenomic analysis, and the basic data which was generated and basic study was published in several internationally reputed journals. But yes, from this, this shows that we are collecting samples from Himalayan hot springs and other. So now, from the genetic material which was extracted from these environmental samples, we did a lot of bioinformatic analysis and to identifying, and we did a kind of gene mining, and we identified that how to identify novel genes encoding different enzyme variants of superior catalytic properties. And one such D-allulose we recognized, for example, here we did gene mining from these hot spring metagenome, and we identified a novel D-allulose enzyme, which was working even at 80 degrees Celsius, and it was showing a very high half-life. In fact, it is the most stable D-allulose reported so far, and it was not at the cost of its catalytic efficiency. It was efficiently making D-allulose. Likewise, another variant we identified and reported, which was functional, and it was even its half-life was about a month at 50 degrees Celsius. Likewise, another variant we reported, and it was beautifully acting not only at high temperature of 80-85 degrees Celsius, but also at low temperature of 5 degrees Celsius. Means from 5 degrees Celsius to 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, it was showing more than 80% activity in such a wide range of temperature, as well as it was acidic, slightly acidic activity also it has shown, and with good thermal stability profile was also very good. So this is a comparison slide. You can see that D-allulose has been reported from different microbial sources, but yes, none from India as of now.
reported TLO stryptase from and different variants shown here in blue color. And now you can compare that the other variants of enzyme reported from different countries. Our stability of our enzyme is unmatched, and it is highest stable, and this stability is not compromised. The turnover number of the enzyme means turnover number means in 1 second how many molecules it can transform. So, but yes, there was an issue. Issue was that the substrate for making the allulose is fructose, and with different discussion with several industries, we came to know that even in India there is hardly any industry which produces fructose. We procure fructose from outside. So then again we mined our data and we looked into is glucose isomerase or xylose isomerase which can make fructose from glucose. So about 50% conversion we could achieve from glucose to fructose, and it was also having a very good half-life. Now in one pot reaction, we were able to make D-allulose not only from fructose but also from glucose. So yes, this is another comparison slide on which shows that our enzyme is quite stable enzyme as compared to other D-allulose stryptases reported so far. Now I come to another very good molecule apart from D-allulose. Trehalose is also a very rare sugar. These are called as rare sugar because they are available in traces in nature. But yes, in some microbes, nature has given to produce these rare sugars in some microbes. So we can use it, and by using biotechnological genetic engineering methods, we can produce it in our laboratory, and yes, industrial production can also be made. So, so trehalose is a very good molecule. It is useful not only in food industry but also in pharmaceutical and cosmetic industry. Why? Because it reduces freezing point of food products, so it is useful in ice cream. So it avoids crystal formation. And in pharmaceutical industry, basically, it is used to save. It saves the. It is a cryoprotected. Yes, this is a better term. That it is a cryoprotected. So it is useful in cryoprotection of sperm cells, blood cells, human organs. So in pharmaceutical industries, in medical industries, it is highly useful. In cosmetic industry, it is also useful because it retains moisture. So therefore, it is highly useful in cosmetic industry. So the cosmetic products which we are using, it is being used, and in ice creams also, in sweetened products. Japan is using it at a large scale, and there is a big market of trehalose. But yes, again, hardly, I think, to the best of my knowledge, there is no manufacturer of trehalose in India because there was no report of trehalose in India so far. So we mined our data and we discovered one trehalose synthase gene, and it was able to transform maltose into trehalose. Maltose, you know, in maltose, glucose are associated with alpha-1,4 bond, but it isomerizes maltose into trehalose, and the same glucose bond is now connected to alpha-1,1 bond. Glucose molecules are connected with alpha-1,1 bond. Likewise, sucrose can also be transformed to trehalulose, another very high value molecule, and thus it was having a dual catalytic ability. So yes, this was also functional from a 5 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. With, you can see here the thermal activity profile and thermal stability profile. Thermal activity profile is this, thermal stability profile here, and it was showing very high stability. It was functional from not only at 45 degrees Celsius but also at 5 degrees Celsius room temperature. So again, this was the first report of trehalose synthase from India, made by our laboratory, our group. And this is a comparison slide. You can see that trehalose synthase are reported from different part of world, but none from India as of now. But yes, our laboratory that has reported trehalose synthase, it shows a very good half-life and very high stability as compared to the other variants reported from different part of world. Likewise, turanose is a very good molecule. Turanose, it has a low glycemic index. It is having dyslipidemic effect, means it, and also it is having non-carcinogenic, means when we eat table sugar, it generates caries in our teeth. So
consumption of furanose can avoid carries formation. Therefore, it is called as next generation sweetener. So one enzyme myelosucrase can transform sucrose into furanose. Likewise, we made furanose from sucrose, and here it was confirmed by different HPLC, TLC, and other NMR analysis. This comparison slide. Now the same enzyme can also make arbutin. So by using sucrose and hydroquinone, it can make arbutin. Arbutin is a very good molecule that inhibits tyrosinase in our human cell, and which reduces melanin production. We all want to become fair, so this and reduce melanin production, which is not advisable, but people do it. हमें सबको गोरा बनने में बड़ा इंटरेस्ट होता है इंडिया में खासकर. So this arbutin is being used widely in all the cosmetic products which we use to reduce the melanin production. So, but yes, there is no manufacturer of alpha arbutin in India. Yes, and this alpha arbutin biosynthesis of alpha arbutin is the first report from India made by our laboratory. We successfully made, and HPLC analysis confirmed its biosynthesis. This is comparison slide. Now, this is the summary which I have explained, that majorly 3 enzymes I have explained. D-allose reuptase, it is a very good enzyme that can transform fructose into allulose, and these are different functions of D-allulose. It is nearly 0 calorie sugar. It is anti-diabetic. Now, trehalose synthase can transform maltose into trehalose, which is a cryoprotectant molecule. And amylosucrose can make furanose from table sugar and also alpha arbutin. Now, I will stop here, and please let me know if you have any question. Oh, yes, I have. I need to acknowledge my team. The hardworking team. One of my NPDF, Dr. Jyoti, is assistant professor in the College of Kanpur. She is posted at Kanpur only. His DLO's work is done by Satya. He is doing postdoc in Texas University, and recently he has been selected as a scientist in ISCT CSIR Institute in Hyderabad. This trehalosynthase work is done by Neera. She is at present in Australia doing postdoc, and amylosucrose work also she has only done. So this is 2 PhDs have worked. Other work I skipped. So this is my team working day and night. These are the doctoral students produced by our laboratory. These are my collaborators, Dr. Amit, Dr. Jayata, Dr. Bhuvan, and I acknowledge the support from DBT, SERB, and also Punjab State Biotech Corporation. Thank you, Indian Science Congress Association. I am also associated with Indian Science Congress Association because I am life member of this organization, and also I got an honor in 2018. The ISCA conference was held in Manipur at that time, and I was conferred Professor Hiralal Chakravarti Award in by Indian Science Congress Association. Thank you, Professor Sudhir Kumar Srivastava. Thank you, my dear brother, Dr. Suren Pratap Singh, for giving me this opportunity to share a few work of my laboratory. Thank you very much. Please let me know if you have any question. Thank you. Any question? Any question from student side? Thank you so much, sir. Thank you. अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रोफेसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव सर जो कन्वीनर इसका है को बुलाना चाहती हूँ बोर्ड ऑफ हेड्स के लिए सर प्लीज. Thank you, madam. Honorable Madam Kumkum Sarungi, Secretary Board of Medical Science, and EC members,
who has joined online. Our guest of honor, Dr. Sachin Director, our special guest, Dr. D.S. Bal, Joint Director, ISCA, our technical expert, Dr. Sunil Pratap Singh, who has also joined online. Our principal, Dr. Arun Kumar Dikshit, Professor Vijay Saxena, Dean Faculty of Science and Technology, friends, ladies and gentlemen, researchers and dear students. It is matter of pride and grief for me that on behalf of KV College Kanpur and ISCA, I have been accorded this opportunity to stand before this august gathering of scientists and researchers to extend the welcome address. This lecture series is being organized in the name of legendary Dr. Naresh Sarup, whose vision for education, administrative acumen, and capability as a mentor and guardian is well known to us. The lecture series organizes humble tribute to the memory of Kar Yogi Dr. Naresh Sarup. We are fortunate to have Mrs. Kumku Sarup online with us, whose presence is always enough to increase confidence in us. Her reassuring smile, affectionate words, have a soothing effect on the atmosphere of all around. She is always with us when we meet her. Kindly accept our sincere thanks. I am grateful to express my deepest thanks to Dr. Shakti Shukla, Director at FPC, Kannauj, for guiding us and providing perfect environment which has been real motivation to all of us. Please accept our sincere thanks for always being a guiding light for us. I am also thankful to Dr. D.S. Bal, Joint Director DMSRD Kanpur, for his sincere and untiring effort for the cause of research in the field of polymer. He has always extended his helping hand when we need him. I am thankful to Dr. Sunil Pratap Singh for his stewardship, support, vision, and commitment. My sincere gratitude for the valuable time he has given to us. I am grateful to our energetic and dynamic principal, Professor Arun Kumar Dikshit, for his untiring support to make this event successful. I thank all the distinguished invitees present here, accepting our invitation, and all good hearts who work behind the screen. I am also thankful to Sri Pratap Singh and his team, Dr. Arun Saxena, Dr. Monika Rohan, Dr. Abha Singh, Dr. Hari Mishra, Dr. Gyan Gupta, for working hard to make this event successful. I am also thankful to Dr. Charu Sudhiri for her recent company. I owe special gratitude to all who have worked hard to ensure that this occasion becomes a memorable success. I thank the media person also for covering the event. Once again, I thank you all for all your attention. Thank you so much. Thank you so much, sir. अब मैं additional activity पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय एसी बंद करो एसी बंद हाँ एसी तो बंद कर सभी से रोल योगा हॉल
देने के लिए इधर